Hello ladies and gentlemen, and welcome to the second episode of Soch Phir Post, where we try to make sense of the chaos in the information ecosystem. Today, we are joined by digital rights expert Farieha Aziz, who is founder of Bolo B, a digital rights foundation working for advocacy, media literacy, and research in the information ecosystem. Farieha, thank you so much for being with us. Thank you. Before we go on to what's happening on the digital rights scene, I think the primary question on everyone's mind today is, what is up with the internet in Pakistan? I wish I knew. We're told different contradictory things, as you know, right? Sometimes the submarine cable fault, sometimes shark machli kha jati hai kuch, So, it just goes on and up. And then obviously the so-called web management monitoring system. Kabhi kehte ki hai, kabhi kehte nahi hai. The so-called elusive firewall. Sure. So I think it's a combination of factors that they're still not really coming clean about what it is, but the WhatsApp media disruption is also continuing. Absolutely. Right? And I think this is very focused. They found their switch on, switch off. Sure. Anytime there's a political situation, they want that people are not able to communicate in real time. And I know for a fact that journalists and reporters in the field have suffered from connecting with their desks, etc. Sure. Have you mentioned every time there's a political situation, they sort of manage to turn off or turn on. And I think it's across Meta products now. And also Twitter or X, as we know, has been unofficially banned for the last several months. But have you kind of made a sense of how they're able to do this now, especially with the web monitoring system, if it's there in place? Because officially, aisa to kuch unhone announce nahi kiya hai. But do you get a sense of how they're able to do this and, why they're doing this? Well, the why is very simple, right? It's to control. Yeah. And there's nothing else. This is not about safety. This is not about cybersecurity. Sure. That how they are doing it is, again, still speculated in the absence of things on record, but how things are adding up in terms of... So with the N's ban, right? It is a complete ban on the website. Absolutely. If you access it through a VPN, it's there. The WhatsApp disruption really provided insight into the level or the ability, the enhanced ability, essentially, right? Because it's an application function level disruption that they are able to achieve. Right. Similar to, for example, what we see in the UAE, where you can't call, but you can text. Sure. And when you say functionality, you mean pictures download nahi ho rahi hain? Media. So it's not being stickers, all that. Videos nahi aap load kar sakte. It's fine. Text-based chat, but again, speed to slow hai. So one is the overall speed. So I'm sure you have the experience होगा कि वो circle जो है after time का जब तक आपका message deliver होता है तो वो तो हो ही रहा है, right? That is the problem. Sure. On top of that is the fact that अगर आप VPN on करते तब तो आपके media चला जाता है. Right. लेकिन उसके बगैर आप नहीं. Right? So वो क्या enhanced ability है, वो किस तरीके से किया जा रहा है. And that, it seems, is what they've been able to acquire. Sure. जिसकी वजह से हो रहा है. So again, they can't block specific pieces of content, right? Because X पे वो specific pieces नहीं कर सकते तो पूरी website. Right. The other thing that people are complaining of, और उसको again तस्दीक कैसे करें या किस तरह से corroborate करें, specific channels and specific videos, so again become blocked, लेकिन उनका access. So I'll explain this in an op-ed in terms of हमारे container analogy is. Right. हम शहर बंद करते हैं, जगह-जगह पे containers बनते हैं, फिर आप traffic clear out करते हैं, गुजर नहीं सकते. Essentially, it seems as if internet पे भी ये वो containers जगह-जगह लगाए जा रहे हैं कि आपका access रुक जाए. आप उनकी request जाएगी एक video के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए. Right. तो video वही है. लेकिन आप नहीं want सकते because of whatever they are trying to do, right? So similarly, ये जो आपके WhatsApp वाले disruption है, it's as a whole पूरे आपके media function में चल रहा है. ये नहीं कि कोई एक pass video कोई user भेज रहा है. But how the technology part of it is still there is speculation. Obviously, the packet inspection technology है और चीजें हैं कि आप data packet. So even if contents आप नहीं inspect कर सकते, अगर encryption आपके अब तक from what we know, कल को बदल right? But how the content नहीं inspect कर सकते, आपको ये तो पता है कि इस data packet में
क्या मीडिया जा रहा है, what type of package, right? And कौन से आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, उसको कहाँ? I think one of the attempts was to bring the companies here and had their data repositories in Pakistan ताकि वो content को भी फिर analyze. I mean that was the logical explanation behind why they wanted companies to have a presence, physical presence in Pakistan. But I want to step back a bit and look at the macro level where we're living in a cyber age. जहाँ पे we're not just communicating with each other, but also businesses are being run. Entire corporations are being run online, and we've seen. पाकिस्तान का जब आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करते हैं तो आईटी इज अ बिग सॉर्ट ऑफ सेक्टर जिसके अंदर पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. हाउ impactful has it been, has all of this chaos been, जहाँ पे आप कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी इंटरनेट स्पीड इतनी स्लो हो गई है ड्यू टू ऑल दिस, स्पेशली ड्यू टू द वेब पॉइंट सिस्टम अगर है या वो whatever reason शार्क्स केबल खा रही हैं कुछ भी, but at the end of the day, internet speeds up so and we're just not competitive in the market anymore because foreign companies don't want to work with us. I assume how impacted has business been, especially the IT sector? But no, I mean, the Software House Association and others have thrown out different numbers as well, right? It's 300 billion losses. Sure. More of that. Freelancers and freelancers have said that हमारे जो this is your contract से जो भी काम मिल रहा था. I remember FIA ने recently suspend कर दिया था. Yes. Because it's an unstable, you can't deliver, and people have not been able to deliver, right? Zoom को तो sustain नहीं कर सकते. But I think it was Bacha member who said that negotiating like $500,000 contract in between Zoom call. So अगर आपकी certainty होनी ही नहीं है. And this is actually colleagues from Bangladesh have said, right? They're coming बहुत हमारा that was the GDP, this side and the other. But they have suffered losses as a result of you took us off grid, etc. And यहाँ पे भी जब मर्जी हुई पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, कुछ जगहों पे बंद कर दिया, कोई सर्विस to stop कर दी, कोई प्लेटफॉर्म का access रोक दिया. So obviously then they will look at you from that perspective. Rather, why would we invest in the market? And a lot of फ्लाइट और जो आपके कैपिटल का होता है कि यहाँ से रिलोकेट कर रहे लोग दुबई. Yes, absolutely. So जहाँ आप IT पार्क्स खड़े कर रहे हैं और बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं, आप इंटरनेट दे नहीं सकते. 5G की बातें हो रही है, पता नहीं अपनी क्या सैटेलाइट लॉन्च करती है, यहाँ शार्ट्स केबल खाती है, इंटरनेट ही बताए. It's all contradictory, right? So वो आपकी environment है नहीं. You don't have certainty. और regulatory certainty नहीं है, आपकी certainty सर्विस नहीं है. तो उस पर फिर हमसे जो सफर किया है, and it's not just that जो काम लोगों ने खोया है, but एक reputational damage, आपकी image का damage हुआ है. In a global market, हाँ, regional contender भी नहीं, forget global contender, right? So आप नहीं compete कर सकते. फिर आप चाहते हैं कि हमारा वही level of control हो और इंडिया पर देखते हैं. सारी repressive चीज़ों के लिए आप इंडिया को देखते हैं कि देखिए आप कंपनीज ने हमारा कंट्रोल भी है, चीज़ें भी हटवा रही थी. इस नजरिए से नहीं देख रही थी क्या मार्केट साइज है, किस क्या सिलिकॉन वैली में प्रेजेंस क्या है वगैरह वगैरह. हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो कंट्रोल कैसे कर पाते हैं क्योंकि कंपनीज वहाँ पे. यहाँ पे कंपनीज डोंट इवन हैव दैट. और आपने पहले से रूल्स के बाद सोशल मीडिया रूल्स रनी करती के टाइम से कि आप ये सिग्नल्स देने शुरू करती है कि आप लेकर आए, हम ये भी कर देंगे, हम आप पे फाइन्स भी लगा देंगे, ये प्रोटेक्शन मिल रही है. So if you want to send out these signals before they're even here, obviously they're on way to start, right? And incentivize आप खुद ही कर रहे हैं through this. And just saying और ममालिक में भी होता है, और ममालिक में और guarantees भी होती है, वो पहले से मौजूद है. और उसके बाद बहुत सारी regressive legislation और सारी चीजें हैं. यहाँ पे तो वो से पहले ही आप कह रहे हैं कि अब आएंगे ना हम आपको बैक पॉइंट पे ठीक है. I think Farieha ने बड़ी अच्छी बात की of the hypocrisy and the irony in all this situation. But I think for me the biggest irony here is कि आपने X पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन आपके सारे political leaders, आप जो भी announcement करनी है, public facing कोई भी messaging करनी है, आप X पे जाके कर देते हैं. I think इससे बड़ी irony हमें देखी नहीं है कि आप unofficial ban में हैं, लेकिन वही leaders जो उस ban को support कर रहे हैं, defend कर रहे हैं, वही जाके X पे फिर post भी कर रहे हैं public facing के लिए, right? And I think this sort of symbolizes पाकिस्तान में जो ये साइबर एज के अंदर हमने जिस तरह से इसको लेके चले. But I also want to bring in your thoughts on digital advocacy जो आप काफ़ी अर्से से कर रही हैं, especially when it comes to rights of citizens when it comes to digital space. How successful have you been
And I also want you to sort of, जब आप success की बात करें तो आपने क्या metrics रखे थे कि यार ये हो गया तो मैं I'll count it as a success. You know, actually, just before we get to this next one, so the hypocrisy, right? उन्होंने notification the बाद पहले denial से notification के बाद कर दिया. And interestingly, जो इसका जवाब पेश किया, this is that I believe information and broadcasting की जो standing committee की meeting थी, कि वहाँ पे information minister ने कहा कि देखिए हमारी जो स्पार्टी ताल्लुकात है, अब कोई हमें अगर कुछ कहता है तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा. So you know, friendly relations with states के लिए हमें तो extra module करना पड़ेगा. But you know, this is, I think I learned this lesson at the time of the YouTube ban. And this is now 2012 में बंद हुआ. So 12 साल. 2014 में फिर बंद हुआ है. 3 साल बंद रहा. TikTok पे फिर बार on off, yeah. But you know, eventually जब YouTube 3 साल बाद खुला भी तो .pk domain and वहाँ पे talking, and it's at this stage एक पर पीका आया, and you know वो भी गुजरात में किस तरीके से इसकी implementation हुई. And so I think the YouTube ban and Pika, it was sort of like, okay, you have to adjust your own sort of expectations of yourself and the process. We don't control outcomes, right? We can only be in the process. So जो हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं और करेंगे. Similarly, the 26th Amendment. Right. So हम जितना कर सकते हैं और जो करना है वो करेंगे, right? But how do you push that conversation? What do you do? The interventions that you make. And what I have seen from the positive side is that पहले YouTube के वक्त में तो कोई मानने को तैयार नहीं था ना, इंटरनेट तो ही प्लेटफॉर्म है YouTube से एंटरटेनमेंट के लिए है. And we've seen at least how this time around, I will say, firewall internet disruption वाला reaction immediate है. So people के टाइम पे भी हमें ये build करना पड़ रहा था, approach करना पड़ रहा था main street media especially also, which have very antagonistic view towards social media, and that exists today as well. कि इसको काबू करने की जरूरत है, right? And उनको ये कहना कि this is about the legislative process, जिस तरीके से हो रहा है, इसके क्या नतीजे होंगे. So उसमें I think this time around, where then we had to really beg and please take this seriously, right? हम किस direction में जा रहे हैं, वो नहीं पोस्ट पीका भी नहीं करना पड़ा, because it's immediate. It's इस पे कमेंट चाहिए, इसको उठा रहे. So आपकी तमाम चैनल के फायरवॉल वगैरह प्रिंट में भी आ रहा है, मेन इलेक्ट्रॉनिक पे भी आ रहा है. That is the shift, right? And I think the shift is also कि ज़्यादा लोग इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी politically भी हमने देखा है, इसके नतीजे सबके सामने आ गए हैं. और sort of face the ads. Pause you here a bit. आप मीडिया के हवाले से बात करें कि media is more receptive now to the advocacy efforts. But what about policy makers? Who are politicians who I feel, and this is my opinion, कि you know, when you reach a certain age and you know आप नहीं समझ सकते हो digital age को, आप नहीं समझ सकते हो उसके potential को, तो how receptive have policy makers been to your advocacy? Do they actually understand the ecosystem? Well, I mean, that again, I think that understanding is absent not only amongst politicians but at the judiciary as well, right? Because they also have very antagonistic view. Politicians have understood the utility for themselves, which is why you still see them a lot more, right? And you see in the election context also किस तरीके से social media का इस्तेमाल हो रहा है and कर रहे candidates भी. So I think at this point they understand, but again the duplicity is there, right? Because they understand to the degree of harnessing they will, but जब उनको बंद करना है उसके लिए वो justification present करेगी. जो कहते हैं नून लीग पीका लेके आए, टीटीआई ने उसको एक्सपैंड किया, उसके बाद दोबारा वही सर्कल हमने किया सीसीआई. So you know, it's for me one thing I know for a fact, जो इक़्तिदार में होगा वो ही रिपीट करेगा, और जो नहीं होगा वो चेंज होएगा, बन जाएगा. It's a cycle. That much is clear to me, right? In terms of our wins, the process matters to push it, to try and defend to whatever extent you can. Another thing, you had some victories through courts. So trying out with this on records में चले YouTube बाहर हो गया, बाकी चीजें on and off हो गई, challenges जा रहे हैं लोग बात करने. All of this, it's incremental. Right. And I think it's a process. Overnight तो कुछ भी नहीं हो सकता. But when you speak of legislation, and you know, you rightly mentioned that when we want to think of regressive legislation or regressive ways or outcomes, we look at India.
But we have progressive laws in the world. We have the GDPR, which actually talks about data protection and security for citizens, right? Hamari legislation may, yes, there are some good things. Yes, FICA is not all bad. Yes, there are some sections that are protective, harassment के खिलाफ, cyberbullying के खिलाफ, but then उनका abuse भी उसी level पे होता है ना. So why hasn't our legislation sort of why can't it be made for people, where people benefit from these laws जो हमारे पार्लियामेंट में बनते हैं? क्योंकि इंटेंट कम नहीं है लोग के लिए नैरेटिव, which is why हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि don't attribute malafide to the parliament. I'm sorry, but why not वो आपके आंखों के सामने जिस तरीके से I mean midnight and 4 बजे स्टार्ट जाती है वीकेंड में रजिस्ट्रेशन और आप सोचो सामने वो क्या हाल होगा, बेचारे न्यूज रूम्स में बैठे हुए थे इसके लिए. हम कुछ नहीं, हम आंखों पे पट्टी बांध ले और सवाल नहीं उठाएंगे क्यों हो रहा है, कितना तासिद के लिए हो रहा है. सिमिलरली विद ऑल ऑफ दिस लेजिस्लेशन पे क्या अच्छा नैरेटिव, हरासमेंट रोकनी है, टेररिज्म रोकनी है, 8-9 साल में कितनी रोकी है. And I think FICA came at time 2 years after APS. It was all part of the National Action Plan. And it was down. Everyone was, yes, absolutely. And everyone was for it. We need something, right? But the way it's sort of evolved over these years and the way we've seen it being used, it's just not for the purpose it was meant for. Yeah, right? And it never is, right? Yeah. And that's the thing to assess. Abhi bhi agar aap reform के नाम में हमें ये भी चल रहा है, जिससे कारण बातें जो FICA कि कानूनी नहीं है, हमें ज़रूरत है तो लेकर आना है FICA, तो फिर भी आई थिंक 1.5 साल स्टॉल कमिटीज में वो कराके फिर कुछ चीजें बदलती हैं, लेकिन फिर भी उसका अपने देखा कि क्या अंजाम हुआ. So again we have to question these narratives, the efficacy and also then the implementation को आप उस पे जायजा लेना, rather than the very sort of एक वो trigger happy approach with legislation, कानून ले आओ, कानून implement किस तरीके से होगा, वो mechanisms आपने देखे, आप criminal justice system, आपकी investigation agencies, prosecution, वहाँ पे लोग वही उसी तरीके से फंस रहे हैं, right? सिर्फ वो केसेस आते जाते हैं जो आप चाहते हैं कि right? And those are also not intended कि हम conviction तक लेके जाएंगे, सबक सिखा देंगे. And the keeping process is punished, right? But you're also punishing the actual genuine affectees who are seeking relief through the law, but they don't get it because you never intended it in that manner. Which also brings me to this. देखिए, अगर मेरे खिलाफ कोई harassment campaign चल रही है या मेरा कोई deep fake चल रहा है, my method of redress would be to approach the relevant authorities, which in this case FIA, जो उनका cyber crime wing है. How impactful do you think FIA's cyber crime wing has been? I'm sure you must be getting calls about cases where they need help with something. तो कितना असर रहा है FIA cyber crime का? And when we talk about the impact, I'm also talking about मुझे नहीं भरोसा कि मेरा मसला हल होगा अगर मैं वहाँ जाऊँगा, right? So have you had cases जहाँ पे success हुआ है and people have actually gotten relief by going to the authorities in these cases? So FIA के साथ मेरा experience, मैं इस पे लिखती भी रही हूँ, I've assisted to let's say sexual harassment जिन्होंने फाइल किया है, जो एक हिसाब में बहुत देती हूँ. One of the first cases FIA का हमेशा ये रोना होता है कि paucity of resources, वो रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी हमें तुम्हारी नजर आती है जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, पर्चे भी करते हैं, ऑनेस्टली होते हैं, और समातों के खिलाफ कितने के खिलाफ, राइट? लेकिन जब कोई चाहता है कि हमारी कोई मुफ्त इमेज है, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं दैट there are women who committed suicide because the FIA just didn't respond in time, right? यहाँ के केसेस थे और उन्होंने very timely manner में जवाब दिया. So this particular case जो कराची में हुआ था, harassment था, उसमें 5 साल बाद conviction है. 5 साल मतलब करते कराते क्यों हुए? FIA ने file हुई, with that entire process, it is re-traumatizing for people to engage with the structure. विक्टिम लेनिंग होती है, और उसके बाद ये आपके सारे जो टेक्निकलिटीज में उठाया जाता है. स्टेट काउंसिल होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट काउंसिल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो असिस्ट नहीं कर रहे होते. सो करते रहा कि भी अल्टीमेटली अगर कन्विक्शन आ भी पाती है, जो उनके साथ हुआ होता है, या अगर जेल टर्म भी किसी ने काशी तो है क्या एंड वो रिपीट होने से नहीं रोकेंगे. सो अगेन द एफिकेसी ऑफ गोइंग थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, व्हाट डू यू गेट एट द एंड, राइट? So वो एक चीज़ है. and again engagement अब FIA के जो के ताकत से नहीं करी, NCCI नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पर आ रही गई, नोटिफाई कर दी रूल्स, उससे कुछ नहीं. अभी आई थिंक रिसेंटली the information minister in parliament said
या लॉ मिनिस्टर ने कहा कि अभी इसको हम पक्ष करें। सो आपने क्या असेसमेंट की कि वो कहाँ FIA में खामियां थी जो यहाँ अब एक और अदारे में नहीं आएगी, या आपने बस ट्रांसफर कर दिया? नया वेरिएशन बनाया गया, आपने बॉडी बनाया। Yes, because जो 2023 की अमेंडमेंट आई है पीका पे, उसमें तो FIA को बाय लीव और पुलिस को भी डाल दिया इन्वेस्टिगेशन। ये आपने SRO रूल्स के जरिए अंडर द लेजिस्लेशन वो कर दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट अब जाके क्या होगा अगर आप बना देंगे और ये केसेस चलेंगे और उसके बाद कोई चैलेंज कर देगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो रिवर्स हो जाएगी, नुकसान किसका होगा? और ये हुआ था पीका के टाइम पे भी। कोर्ट्स नोटिफाई होने थे, महीनों तक कोर्ट्स नोटिफाई हुए, अर्जेंसी हमें कही थी कि अभी ला रहा है पानी। FIA को आपने 2-3 महीने से डेजिग्नेट नहीं किया और नोटिस नहीं जा सके, कोर्ट्स को आपने डेजिग्नेट नहीं किया। FIA केसेस चलाती गई उन कोर्ट्स में जहाँ में जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। So nobody knows how to test or the implementation होती है। So you're really not it for the people, right? अभी भी can escalate। और FIA की जो excesses है, उसका कौन accountability करेगा? या वही इदारा अब NCCI politicized नहीं होगा इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? I think every case that is political in nature जो ये use करते हैं, it starts to disadvantage the general. Absolutely. Yes. But yeah, I want depend on the state for my safety, especially when it comes to the digital space, because now हमारे पास कोई strong data protection laws हैं. My data is being maybe used by any company or any tool that I'm using. I don't know क्या use कर रहे हैं उसका, right? So and then you can't even shut off. You have to be in the online spaces. You have to use online tools. हर टूल आपसे मांगता है आपका ईमेल एक्सेस, हर टूल आपसे मांगता है कोई ना कोई आपका आइडेंटिफिकेशन, राइट? एंड आई नो फॉर अ फैक्ट आई यूज डजन्स ऑफ टूल्स, तो उन सबके पास मेरा कोई ना कोई एक्सेस है. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेफ इन दिस एज ऑफ disinformation, but also जहाँ पे your data, your personal data is a precious commodity for these companies that may not even उनका jurisdiction नहीं बनता पाकिस्तान में. So even if the state was powerful and the state was thinking of me, jurisdiction ही नहीं बनता, right? So how do you keep yourself safe? I know you talk a lot about literacy and digital literacy, but what is your top 3 things that you advise people कि आप किस तरह से online अपना behavior modify करें कि आपको नुकसान ना पहुंचे? See, it's very relative. Safety is very relative, right? And risk assessment हर किसी के individual profile उसकी वजह से भी मुख्तलिफ होता है. So whenever I do the digital safety trainings, I say there are basic settings again आप करें. Sure. But what you choose to post or how you communicate, that's an assessment you have to make for yourself. Right. Depending on the line of work you're in or how much of a target you perceive yourself to be. Because to be honest, इस तरीके से हम जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है encrypted कि हम WhatsApp या Signal बात करेंगे, फिर Signal बात हो गया या WhatsApp की डिस्ट्रक्शन हो गई. अगर आपके इंटरनेट चल ही नहीं रहा, so when you're out, अगर आपका करना है, you're forced to go to the open line, which you know is passing through the centralized, whatever. Right. What do you do in the absence of, So this is a reality that we are faced with. But at the same time, I still feel the awareness of what your digital footprint is, what the settings are, how you can harness, ताकि educated तरीके, informed तरीके से आप अपने आप को conduct करें. Vulnerabilities रहेगी, वो state की तरफ से होंगी, वो random hackers की तरफ से होंगी, people you know, scammers, corporates. Sure. ये सब रहेगा. Unfortunately, I think पाकिस्तान में तो we've seen आपका डेटा बड़ा आसानी से available होता है, and these scammers they have everyone's data. I have WhatsApp पे ग्रुप्स बने हैं जिसके ऊपर डेटा 500 रुपए में बिक रहा है लोगों का. नादरा का डेटा अवेलेबल है, so बैंक्स का डेटा अवेलेबल है. So it's very easy to scam people. और डेटा प्रोटेक्शन तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. Even though we have a law and उसका abuse, लेकिन implementation नहीं है. बस ये नहीं है, even जो report करते हैं लोग, for example, financial fraud is covered under the current framework. लेकिन अगर कोई जाता है तो FIA in a lot of instances also doesn't. देखिए आप ₹1,00,000 वाला केस ले आए. So but the fact is on वो ₹1,00,000 किसी के लिए बहुत रखा, right? So it's also a degree of because FIA was typically prior to PICA, white collar crimes, all of that, right? So that mindset is still not. They're not a service delivery to citizens kind of institution, right? And then आपने वो politicize किया हुआ है अलग.
So that's what we need to cater to the average citizen वो नहीं होता. Data protection का भी जो bill है, you know, every time in surface we up लेके आता है और अभी parliament में भी speeches हो रही है, IT minister वगैरह के हम लेके आएंगे, उसमें भी मसाइल हैं. Because that's not protecting your data. That is actually facilitating कि आपका data का जो access है वो हुकूमत के पास कैसे हो सकता है, right? क्रॉस बॉर्डर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं. GDPR में भी जो अगर कुछ चीजें हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट adopting something as a copy paste job. तो absolutely not. Yeah. और इस बहुत डिफरेंट है आपका. But और कहाँ पे rule of law environment है तो याद नहीं है. तो आपकी enforcement इस environment में जहाँ de facto prevails. किस तरीके से? Sure. And which is why we are more cautious when the state wants to legislate, because we know that it is more to strengthen the state or state institutions versus the citizens and giving them some remedy, right? Sure. And of course, corporate accountability bhi honi chahiye. And you know, as members of the Global Network Initiative, that's a conversation to decades se chali aa rahi hai ki wahan kaise ho. But again, I feel like users are sandwiched between the state and corporates, right? And dono taraf se unki expression of privacy rights wo is there. The last question for you, and I've sort of struggled with this for a long time. The digital space was supposed to be this free space where every citizen, no matter where they were in the world, every human being could voice their opinions, have freedom of expression. But उसके ऊपर हमने abuse भी देखा है, उसके ऊपर हमने inciting to violence भी देखा है, hate speech भी देखी है. My question is, should online spaces be regulated? And if yes, should the state do it or the social media companies? Right? Yeah. Okay, so the thing is that it's already regulated, which is, we already have it. And the companies also have their own policies. Sure. Are either of them working? No, not for the purposes that they intended for. So time frames of, getting back on, even when users report to platforms, right? That's a whole issue as well, or that's what recognizes harm. Similarly, what the state addresses through the laws and the mechanisms and the available remedies. So there is that. But it's not unregulated anywhere, right? And हमें जो कहा जाता है कि regulate करने की ज़रूरत है, मुझे ये सवाल होता है लेकिन आप regulate तो कर रहे हैं और उससे क्या नतीजा निकल रहा है? So आप और क्या regulate करेंगे? कोशिश करें, because again there's a problem. What you define as a problem and you present as a solution was the contradiction. Right. वो जब तक आप addressing करेंगे, we will continue in this, AI, deep fakes, हमारे दिमाग तो अभी भी internet बंद कर दो, website में फंसा हुआ है. We're not even grappling with the direction in which all this is headed. The internet, over a decade, 15 साल पहले जब सबने शुरू किया था social media का इस्तेमाल के democratization affected, we've also seen how it's harmed, right? Where it's silenced marginalized voices. कोई platform मिलना था, driven them off, उनको harms, and online harms then translated to offline harms, right? Lynching वगैरह सारा. There is a real need to address this. लेकिन वो address हम सिर्फ legislation के जरिए नहीं कर सकेंगे, सिर्फ कुछ regulation या platform के policies के जरिए नहीं कर सकेंगे. We also need, it's a social conversation. What you see online is maybe reflective of what is there in society, right? Maybe the virality, the visibility is far more, but the fact is, it's a product of your society. And unless we address those factors, this is not on its own. It's not, हमारे represent किया जाता है as if ये कोई unique issue है, social media specific issue. And no, throughout human history, disinformation has been a thing, whether it was word of mouth or the printing press or now social media culture होगा. So it is not unique to a media. It is about human society. Right. Thank you so much, Farieha, for sharing these thoughts. And I hope, some of the policymakers who are listening, listen to this conversation and actually pay heed to this idea that, it's not a social media issue. It is an issue with how society functions, and an overall approach is required to, if there has to be some change, because आपकी legislation का जो intent है, वो ही शुरू से आप अगर कहेंगे कि जी citizens को, political dissent को आपने दबाना है, तो फिर उसके ऊपर you can't expect कि आपके progressive laws बन सकते हैं.